suppose consider at the interface between two medium epsilon and epsilon2, no charges on the surface. So it is D suppose going perpendicular like above this. is equals. This is suppose epsilon1, this is epsilon2. Field is electromagnetic wave is going like this. And first of all, you know E, suppose this medium 1. So E1, E parallel above is equal to E parallel below. Correct? There is no involvement of charge in this. Yes. And D perpendicular above Is equals to D. is equal to D perpendicular below. Because in this free charge is involved, which is 0. Free charge is involved, na? Yes. D perpendicular. So अगर मैं यहाँ पे E parallel लेता हूँ, E parallel component, what will that become? Sin theta. सबसे पहले parallel नहीं, sin theta cos theta is not required ना, just inequality we have to see. Okay. So E parallel above is equal to E parallel below. So I can write D का formula क्या होता है? Epsilon E ना? Yes. So that means D, what you can write for E parallel in terms of D I want to write. So D parallel above by epsilon1 is equal to D parallel below by epsilon2. Correct? It is given that epsilon1 is greater than epsilon2. ये ठीक है? देखो D का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अबव है, तो ये बात तो आपको समझ आ रही होगी कि D is actually is equal to D perpendicular plus D parallel. Are you getting this as a vector quantity? Yes? So perpendicular component is equal. So only comparison of parallel component can be done to give inequality in D. सबसे पहले ये समझो. तो parallel में क्या हो रहा है कि D parallel above is equal to epsilon1 by epsilon2 D parallel below. Which parallel component is greater? 1 or 2? Tell me. 2. D parallel to B is greater than D parallel A. Sorry, D parallel? Epsilon 1 is greater than epsilon 2. I mean, so this is 1, this is 1, and this is 2. So this is 1 and this is 2. तो कौन सा बड़ा है? D2 component. कैसे? Epsilon 1 is greater than epsilon 2. So D parallel is 2 times. D parallel 1 is 2 times, no? D parallel 2. Suppose it is 2. Suppose this is 2 and this is 1. ऐसे समझो. So which one is greater? 2 is greater or 1 is greater? 2 is greater. Oh, D is epsilon. आप लोग, हाँ? बताओ. Which one is greater? D2 is greater or D1 is greater? अगर मैं यहाँ 2 रख दूं तो D parallel 1 is equal to 2 times D parallel 2.
1 is greater. 1 is greater, na? So D1 is greater than D2. Is that okay? सर हमेशा नंबरिंग से कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज कंफ्यूजन होता है. हाँ, ये तो हमेशा ही बेस्ट है, बिकॉज अगर यहाँ एप्सिलॉन 2 बड़ा होता तो चीजें कुछ और होती, बट एप्सिलॉन 1 बड़ा है. और चार्ज फ्री रीजन में हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते डी पैरेलल अबव इक्वल्स टू डी पैरेलल बिलो बिकॉज नहीं, डी पैरेलल नहीं कर सकते. इट इज रिलेटेड टू पोलराइजेशन. सी द फॉर्मूला फॉर पैरेलल. इक्वल्स टू पोलराइजेशन अबव. हाँ, so don't go into polarization, na. Go, see, charge free is given, so use perpendicular component of D and parallel component of E. That is the best way. ओके. यहाँ भी कोई फ्री चार्ज इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ भी कोई फ्री चार्ज इन्वॉल्व नहीं. एंड मैं D पैरेलल से D के बारे में कैसे कह पाया, कोई बताएगा? एनीबॉडी? बिकॉज डी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑलरेडी आर इक्वल है, इक्वल. तो इक्वल है. तो जब मैं मॉड लूंगा, आर यू गेटिंग इट? एक्चुअली D क्या होगा? अंडर रूट ऑफ D perpendicular square plus D parallel पैरेलल square. But स्क्वायर. since this is equal, so only this will play the role. ओके. ओके, थैंक यू. Now, what about electric field? You can say D perpendicular A is equal to D perpendicular B. D is epsilon E. So epsilon 1 E 1 perpendicular is equal to epsilon 2 E 2 perpendicular. एंड E का पैरेलल कंपोनेंट सेम है, सो जस्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता सकता हूं. सो अगेन you can take E1 is greater E2 than. is greater than E1. So now what will happen? E2 is greater than. So you can write modulus of E2 vector is greater than. यहाँ पे वेक्टर लगा सकते हो because is greater than modulus of E1 vector. ये देखो जरा, सभी लोग समझ गए? बाउंड्री कंडीशन इस क्वेश्चन से काफी हद तक क्लियर हो जाता है. और इनइक्वालिटी जहां भी इन्वॉल्व हो, दिस इज ग्रेटर देन दिस, पुट दिस 3 2 और 2 1 व्हाटएवर यू वांट टू राइट, सो दैट वो कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए कौन बड़ा है कौन छोटा. चलो, ये भी क्लियर हो गया भाई सबको? इज दिस क्लियर? यस सर. ओके. Let us do this question. Read everybody.